All right, so I guess we should start. Assalamu alaikum, everyone. My name is Hassan Azai, and I'll be your host today. Today we have a very honorable guest with us, Mr. Arzish Azam. So I'll just list his achievements. He's the youngest graduate from the Founder Institute and a country manager for Startup Grind Pakistan, along with the CEO of Ejad Labs. Now that's already pretty impressive, but there's more to his legend. So he has found many leading tech companies such as Startup Grind Pakistan, along with Pakistan Tech Summit, and he also basically the in charge of the largest tech exchange program from Pakistan to Silicon Valley, North America, and Europe. And through his efforts, he has helped hundreds of startups and small and medium enterprises to basically set a foot in the industry. And he has been recognized at an international level for his efforts and achievements. So it's a great honor to have him with us here. And I'll pass the mic to you, sir. थैंक यू सो मच फॉर द वेरी काइंड इंट्रोडक्शन। तो पहले तो ये क्या हम उर्दू में ये सेशन कर सकते हैं अगर कोई इशू नहीं है तो? Absolutely, sir. जी, आई थिंक वो उर्दू में शायद ज़्यादा आसान हो जाता। तो आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन करा दिया, अब इसके बाद मैं अपने बारे में तो नहीं कुछ बता सकता। आई थिंक प्राइमरीली जो जो हमारी फील्ड है, जो एक्सपर्टीज़ हैं, जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सबसे बड़ी आईटी कॉन्फ्रेंसेस कराई हैं, कराते रहते हैं पाकिस्तान के अंदर भी और बाहर भी। और जो सारा हम काम करते हैं, इसमें नेटवर्किंग का बड़ा एक एक की रोल रहा है। और मैंने भी सीखी है। मैं माय एज इज करंटली 24, व्हेन आई स्टार्टेड आई वाज लाइक 18-19। और मेरे भी कोई खास इंडस्ट्री में ऑलरेडी रिलेशंस या कनेक्शंस नहीं थे। सारा कुछ फ्रॉम द ग्राउंड अप बिल्ड किया है। और उसमें कुछ लर्निंग्स मेरी हैं, लेकिन आई थिंक मोस्टली स्टैंडर्डाइज चीज़ें मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो भी शेयर करूं। उसमें जो कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस हैं उनको आपसे शेयर करूं, और अगर उससे आपका कोई फायदा हो सकता है तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो प्रेजेंटेशन, आई होप यू कैन सी द नेटवर्किंग एंड करियर डेवलपमेंट वाली जो ये प्रेजेंटेशन है। Yes, sir, it's visible. परफेक्ट। तो आई जस्ट गेट राइट इनटू इट। तो प्राइमरीली आज जो थोड़ी कोशिश होगी, जिस प्रेजेंटेशन भी जो मैंने बोरा की एक लीडिंग एक्सपर्ट से, कि आपको मैं थोड़ा सा शेयर कर सकूं कि किस तरह नेटवर्किंग को आप एज अ टूल यूज कर सकते हैं टू बिल्ड इफेक्टिव रिलेशनशिप्स, राइट? तो जस्ट नॉट कि यार आप कॉन्टैक्ट इकट्ठे कर लें कि ठीक है मैं 200 लोगों को जानता हूँ। यू शुड फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप्स दैट प्रोवाइड वैल्यू for you and also for the other person, right? That's like real networking. The other is there are two types of people, any relationship. One is the giver, one is the taker. And we need to kind of have this like give first mindset to gain most जो ज़्यादा फायदा हम नेटवर्किंग से उठा सकते हैं, उसके लिए हमें जो है गिवर बनने की ज़रूरत है। वो लेटर विल एक्सप्लेन व्हाट दैट इज। द थर्ड इज कि इन ऑर्डर टू काइंड ऑफ maintain these relationships, how do you stay in touch with people, what kind of skills, attitudes and practices you need to do to make sure कि जो आप relationships बनाते हैं वो grow करते रहें, ताकि जब भी आपने अपने करियर में आगे मूव करना है, जब भी आपको किसी से काम पड़े तो आपका वो रिलेशनशिप जो है वो एक्टिव हो। इन द यूएस और इन द वेस्ट प्रॉबली लोग जो है वो 3-4 करियर चेंजेस करते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन पाकिस्तान में शायद हम करियर चेंजेस इतने नहीं करते, जॉब चेंजेस बहुत ज़्यादा करते हैं। और उसमें भी हमें बहुत जो है रिलेशनशिप्स की, नेटवर्किंग की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली शायद गेटिंग योर फर्स्ट जॉब। वो तो पाकिस्तान में बहुत ही नेटवर्किंग और रिलेशनशिप की बेस पे ही होता है। तो अगर आप एसेंशली देखें तो नेटवर्किंग इज अ स्किल, राइट? एंड जब भी हम किसी से बात कर रहे होते हैं, हम किसी से मिलते हैं, तो एसेंशली हम नेटवर्क ही कर रहे हैं। बस हमें शायद पता नहीं होता कि यार हम ये दिस इज कॉल्ड नेटवर्किंग। ज़्यादातर लोग हमेशा से ही करते आ रहे हैं। आप किसी इवेंट पे जाते हैं, वहाँ 4 लोगों से मिलते हैं, उनसे आपकी दोस्ती हो जाती है, कॉन्टेक्ट शेयरिंग हो जाती है। दैट इज एसेंशली नेटवर्किंग, राइट? बट जब आप रियलाइज कर लेते हैं, जब आप टारगेट कर लेते हैं कि यार आई वांट टू डू नेटवर्किंग फॉर दिस सर्टेन ऑब्जेक्टिव, तब फिर आपकी कुछ स्ट्रेटजी को थोड़े से क्लियर एक्शन पॉइंट्स बन जाते हैं, राइट? सो मेन
पर्पस अगेन क्या है? नंबर वन इज टू बिल्ड relationships and not contacts, right? So the difference is, with contacts, even I can share you like hundreds of numbers of someone, but जब उन्हें कोई आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी या उनको आपकी ज़रूरत पड़ेगी, तो कांटेक्ट में आप उस तरह जो है अपॉर्चुनिटीज शेयर नहीं करते, रेफरल्स शेयर नहीं करते. दैट्स व्हाई नीड टू फोकस मोर ऑन लाइक द नॉन transactional stuff, right? Become friends with people, understand what they're doing, what you're doing, how it aligns, and be like a giver, right? तो you have to figure out कि आप उनको वैल्यू एडिशन किस तरह कर सकते हैं, even though they might be way ahead of you in professional life, right? The second is कि it's kind of like a method to develop yourself as well, right? कि आप लाइक माइंडेड लोगों से मिलते हैं, आप अपनी इंडस्ट्री के सीनियर लोगों से मिलते हैं, डिफरेंट तरह के लोगों से मिलते हैं. इसी तरह आपकी लर्निंग भी होती है, इसी तरह आपकी पर्सनल ग्रोथ, प्रोफेशनल ग्रोथ भी होती है. Then it is a two-way relationship, right? It's not like alhamdulillah I have like a very strong network inside and outside Pakistan. It's not कि हमेशा मैं ही उनसे कोई benefit ले रहा होता हूँ. A lot of the times it's something that I can offer as well, and everyone in this network can kind of offer to each other as sort of an exchange, right? uh, and for a lot of people in the early stage of their careers, uh, networking can be an amazing tool to kind of open doors on new jobs, projects, partnerships, whatever you're trying to do, right? So I'm assuming कि यहाँ ज़्यादातर university students हैं, and उनका target job होगा. The giver and taker equation, right? So this is like a textbook definition, बट जनरली ये है कि हमारा कुछ कल्चर शायद इस तरह बन गया है कि हम कोशिश करते हैं कि जो भी हमें इंसान मिला है, हम उससे क्या फायदा उठा सकते हैं. सो आई बिलीव, एंड दिस इज ऑनेस्टली लाइक अ वेरी सेल्फिश थिंकिंग. द थिंकिंग नीड्स टू बी कि आप उन्हें क्या फायदा दे सकते हैं, इवन दो दे माइट हैव way more experience and success and expertise than you, but still you can offer them value in a number of ways, right? So for example, even if you listen to someone who's like very experienced and considered like an industry leader, तो उनको जो आप वो वक्त देते हैं, जो अटेंशन देते हैं, जो उनकी बात गौर से सुनते हैं, उनके लिए वो भी एक वैल्यू हो सकती है. आप जो है उनसे पूछ सकते हैं कि आप उनके किस तरह काम आ सकते हैं. आप मल्टीपल लोगों का आपस में इंट्रोडक्शन करा सकते हैं, राइट? कि आपको कोई टॉप लेवल सीईओ मिला और कोई और आपको एक्सपर्ट मिला, आपने कहा अच्छा जी मैं कनेक्ट करा देता हूँ. और इस तरह के बहुत से तरीके हैं जिस तरह से यू कैन बी लाइक द गिवर इन योर नेटवर्किंग स्ट्रेटजी. और इससे क्या होता है कि जब आप लोगों के काम आते हैं और शुरू में ही काम आने की कोशिश करते हैं, तो लोग फिर आपको याद रखते हैं. फिर लोग जो है आपसे अपॉर्चुनिटीज शेयर करते हैं, आपसे रेफरल्स देते हैं, और आपका एक काइंड ऑफ पॉजिटिव इम्प्रेशन बन जाता है. और रिलेशनशिप भी इसी तरह स्ट्रांग होता है जब यू हैव दिस लाइक गिव एंड टेक थिंग. The again, like uh, in order to in every relationship, I think Pakistan में like there's a trust deficit, right? So जब भी हम किसी को मिलते हैं, हमें होता है कि यार अच्छा, we need to find some link कि हम इन्हें ट्रस्ट करें. ट्रस्ट हमारा जनरली सोसाइटी में कम है. बट जब आप ये गिवर वाला माइंडसेट रखते हैं और कुछ करते हैं, तो यू हैव इंस्टेंटली डेवलप ट्रस्ट इन द अदर पर्सन अबाउट योरसेल्फ, राइट? सो अब चाहे आपने कोई जॉब करनी है, कोई प्रोजेक्ट ढूंढना है, अब उनके लिए बड़ा आसान है कि वो आपको रेफर करें फ्रॉम अमंग लाइक मल्टीपल other people. And it's also the impression that you're making, right? So sometimes your physical presentation also matters, but I think that's only for the opening. But mostly I think the work you do and the value you provide is more uh, kind of more relevant or more valuable. Some of the key traits of good networkers. And तो आपके करियर में यू माइट थिंक कि अच्छा, शुरू में हम यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, हमें जॉब नहीं मिल रही होती, शायद हमें अभी नेटवर्किंग करने की ज़रूरत है. बट एसेंशियली आपको तो लाइफ लॉन्ग नेटवर्किंग करने की ज़रूरत है. सो करियर ग्रोथ जो है, वो ऑब्वियसली स्किल हैज़ अ वेरी बिग प्लेस.
but a lot of it comes from your network and the people and the people you move around with, right? And that's how you get promotions and transfers and good jobs and good opportunities after having the said expertise, right? It's not कि हम कह रहे हैं कि आप expertise develop ना करें, बस दोस्तियां कर लें काम हो जाएगा। लेकिन expertise आपकी हैं और हमारे 220 मिलियन लोगों की population है, तो बहुत से और लोगों की भी होंगी। तो उसमें आगे जाने के लिए you need to be a really good networker, right? So these are some of the traits of good networkers. Number one is कि remember names, right? जब भी आप किसी को मिलते हैं और आप दोबारा नहीं मिलते और दोबारा मिलते हैं और आपको उनका नाम नहीं पता होता, तो वो दूसरे बंदे के माइंड में एक बड़ा बैड सा इंप्रेशन होता है। उसे लगता है कि यार वो इतना इंपॉर्टेंट ही नहीं था कि आपने नाम याद रखें। अब हो सकता है आपका नाम याद रखने की आदत ना हो, तो इसमें कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। बस बंदा नाम लिख ले, को 2-3 दफा बोल ले, किसी चीज से लिंक कर ले। तो देर आर टेक्निक, बट एसेंशियली रिमेंबर पीपल्स नेम एंड ऑलवेज एड्रेस देम बाय देयर फर्स्ट नेम, राइट? तो हमारा जो ये कल्चर है साहब वाला या भाई वाला, राइट? आई एम श्योर पीपल आर फाइन विद इट और वट एवर, बट हम ये साहब वाले कल्चर को फॉलो नहीं करते। वी जस्ट यूज फर्स्ट नेम बेसिस, सो दैट्स you develop like an equal relationship instead of something like their superior. So whenever you call someone sir, right, so आपने by default उसे अपना superior declare कर दिया कि यार आप तो हमसे ऊपर हैं, right? You need to have relationships which are equal, and then provide people the opportunity to talk about things with you, right? Maybe discuss what kind of project you're working on, final year project, or what technologies kind of इंट्रीग यू, या आजकल क्या नया ट्रेंड चल रहा है, लेट्स से बिटकॉइन जो है या कॉइन बेस का आईपीओ है, तो काइंड ऑफ हैव लाइक कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स, राइट, व्हिच द अदर पर्सन कैन यूज एज वेल. Good listeners, again, in networking, I think the perception is कि अच्छे नेटवर्कर वो होते हैं जिन्हें शायद बोलना बहुत अच्छा आता है. मुझे आज तक अच्छा बोलना नहीं आता, इलॉन मस्क को नहीं आता. और the more valuable skill is कि you need to be good listeners, right? क्योंकि people will remember you, people will trust you, people will develop a relationship with you if you show genuine interest in whatever they're doing, what their journey is, and are good listeners, right? So good listeners का मतलब ये नहीं आप चुप करके सुनते रहे. You need to really understand and listen to their story, tell them कि अच्छा इस तरह होता है, या relate to their story as well, and give them your full attention, right? The other is to kind of find mutual interest, right? So uh, as human beings हमें जो है हमेशा अपने जैसे लोग ही अच्छे लगते हैं. आप अभी भी अपनी अगर दोस्तियां देखें सारे, तो उसमें कोई ना कोई म्यूचुअल इंटरेस्ट होता है. आप पता नहीं सारे सुबह उठना पसंद करते होंगे, कुछ लोग स्पोर्ट्स इकट्ठे करते हैं, कुछ लोग जो हैं उनके रिलीजियस बिलीफ्स सिमिलर होंगे. Either way, when you're talking to someone new, you need to pick up things where there is mutual interest, and you need to show that as well कि अच्छा you like this, I like this too, you do this, I do this too, आप इसमें बिलीव करते हैं, I totally agree and I'm all for it, और इस तरह की चीजें. Humor can be a really good tool to like, so when you go to like this new place, meet new people, uh, sometimes start करना मुश्किल हो जाता है, right? So there you can like use jokes or humor or whatever. Even in serious conversations, I've done it a number of times, you get noticed, right? और तब तक आप बोलेंगे नहीं तो आप पहचाने नहीं जाएंगे, right? So you need to have like ice breakers and things that can get you noticed, especially if you are in places like in new places. uh, फॉलो अप इज रियली इम्पोर्टेंट. एक जो चीज मैंने, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, तो एक जो मैंने चीज नोटिस की स्पेसिफिकली आई थिंक इन इन पाकिस्तान, कि हम बहुत से लोगों से मिलते हैं, बहुत से लोगों से हम चीजें डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन हम फॉलो अप नहीं करते, राइट? सो इन नेटवर्किंग फॉलो अप इज की, राइट? इफ यू टॉक टू समवन, उन्होंने कहा अच्छा हमें ये बुक अच्छी लगती है, आपने कहा जी बिल्कुल मैं आपसे पीडीएफ शेयर कर दूंगा, या वट एवर जो जो भी टास्क हैं, जो भी चीजें आप डिस्कस करें, यू नीड टू मेक श्योर दैट यू
either get those done और provide them an update, right? तो मैं बहुत से लोगों से मिलता हूँ को मैं 10-10 चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ कि अच्छा जी मैं आपको इससे कनेक्ट भी करा दूंगा और जो है मैं आपको ये लिंक भी भेज दूंगा और हो सकता है कि वो 5 में से 2 चीज़ें नहीं हो पाए, राइट? But at least I send them an update. Yeah, I tried this. This isn't working, but here are the things we discussed. This is, this is like the follow up of what we did, and that really strengthens the relationship. सॉरी, आई मीन न्यूयॉर्क, यहाँ पर जरा नाश्ते का टाइम अभी हुआ तो and then the last point is really interesting, right? So actively like share things, right? So when you know people, you talk to people and you listen to them carefully, right? As good listeners, तो आपको बहुत सी चीजें याद रह जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई सी समथिंग related to like a new cryptocurrency, right? So I'll share it with a number of friends who आई रिमेम्बर कि अच्छा यार वो क्रिप्टो में जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट? या फॉर एग्जांपल समवन वाज टॉकिंग अबाउट कि यार पाकिस्तान में ट्रकिंग स्टार्टअप्स बहुत हैं, तो जब मैंने न्यूज़ देखी कि अच्छा एक ट्रकिंग स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट हो गई है तो मैंने फिर उससे शेयर की, राइट? सो जब आप और दिस विल हैपन नेचुरली, इट्स नॉट लाइक इट टेक्स अ लॉट ऑफ लाइक हार्ड वर्क कि अच्छा यार अब कैसे याद रखें कि किसको किस में इंटरेस्ट है. बस आप गौर से सुने, बी गुड लिसनर्स एंड अल्लाह का निज़ाम है, चीज़ें कनेक्ट हो जाती हैं. जब कोई भी चीज़ उस तरह की आई, योर माइंड विल ऑटोमेटिकली कनेक्ट किया अच्छा यार ये इस बंदे ने भी बात की थी, you'll share with them. Essentially, as I said, like what is your network, right? So आपका already बहुत सा network होता है, number in your family, your friends, the friends you make in university, the friend you make in school, जो आपके area के friends हैं, that's like your by default network, right? But you need to kind of go beyond that. तो आप अगर अपना career start कर रहे हैं, you need to know people from the industry, you need to know maybe industry leaders, right? Let's say आप Python के engineer हैं, just find out whoever's like the top Python engineer in the country, in your city. Go talk to them, reach out to them, use LinkedIn. Then when you like get a job, get into like the practical life, you develop relationship and network with your business associates, right? With people from different companies maybe that you meet and events and all. With your customers, if it's like a customer facing job, आपके कोई इंटरेस्ट हो सकते हैं लाइक स्पोर्ट्स एंड मे बी लाइक स्विमिंग और वट एवर, और वहाँ पर जो आपको लोग मिलते हैं, दोज आर योर नेटवर्क्स एज वेल. Again, community and neighborhood members, which is I think very strong in some areas of our country, and so on, right? And uh, शायद हमें लगे कि अच्छा ये जो है लेट्स से स्पोर्ट्स वाले ग्रुप का मुझे क्या फायदा है, राइट? सो अगेन वी नीड टू हैव लाइक दैट गिव फर्स्ट मेंटेलिटी कि हम जहाँ भी जिससे भी मिले हैं, we need to figure out कि what value we can add to their life, and somehow it always like connects back, right? Somehow it will be useful. But sure, if you want to say कि अच्छा यार I went to like spend more of my time kind of networking with professionals, then it's your call. उसमें भी कोई हर्ज नहीं है. और अगेन ये थोड़े से नंबर्स जो हैं, थोड़े स्टेटिस्टिक्स, ये अमेरिकन है जहाँ पर जो है लोग अपने करियर ही चेंज कर लेते हैं 3 4 5 दफ़ा. पाकिस्तान में आई बिलीव कि शायद करियर चेंज इतना ज़्यादा नहीं होता. जनरली लोग एक ही करियर में रहते हैं, बट जॉब चेंज बहुत ज़्यादा होती है. मे बी कुछ लोग शायद अपनी करंट जॉब से खुश नहीं होते, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में खुश नहीं होते, कहीं वो ग्रोथ नहीं देखते. और you really need to have a good network to get into like a different job that is better than your current one, right? You can always get into a different job that is not better, right? You go somewhere, tell them कि अच्छा मैं यहाँ ये कर रहा हूँ, anyone would hire you, right? But in order to kind of jump up and get a promotion or move, you really need to focus on building your network, right? uh, in this is like they're saying experience has shown के जो 50% कैंडिडेट्स हैं वो अपनी जॉब नेटवर्किंग के थ्रू उन्हें मिलती है. मेरे एक्सपीरियंस में ज़्यादातर जो अच्छी जॉब्स हैं प्राइवेट सेक्टर में, स्टार्टअप्स में, हर जगह ही पाकिस्तान में स्पेसिफिकली, वो रेफरल्स के थ्रू मिलती हैं, वो नेटवर्क के थ्रू मिलती हैं. अच्छा, इसमें कोई बुरी बात भी एज सच नहीं है. अब लेट से हम भी कोई जॉब पब्लिश करें तो उस पे 150 200 300 सीवीज आ जाते हैं, और एक बड़ा
लंबा प्रोसेस होता है इनको रिव्यू करने का, देखने का, सारे लोगों को इंटरव्यू करने का, और उस सब करने के बाद भी यू आर नॉट श्योर कि दिस पर्सन विल डिलीवर ऑन व्हाट ही इज सेइंग. So what you do is you essentially find referrals. You say, who you've worked with, or sometimes you just ask your circle, we're hiring for this job. Can you please refer people? So in this economy where there's like a trust deficit, and referral is a big thing, you really need to have like a strong and diverse network, right, to really grow your career. एंड अगेन, सो जब आपके एग्जिस्टिंग थोड़े रिलेशनशिप्स होते हैं, आप जाते हैं नई जगहों पे, वहाँ आपको नए लोग मिल जाते हैं, दैट्स हाउ योर काइंड ऑफ network expands, right? And then you can also like target different organizations. You can say, अच्छा यार मैं MNC में जॉब करना चाहता हूँ. Then you need to like move in that circle, make your network, go to events, connect with those people, find your friends who are already there, and kind of find their friends and all of that. And again, it should match your interest or values or whatever you're trying to do. It should align your networking strategy. या सो जिस तरह के मैंने पहले कहा, कि ऑल दो इन सारी बातों से लगे कि शायद शायद सारे काम दुनिया में होते ही नेटवर्किंग से हैं, जो आई बिलीव कि टू सम एक्सटेंट ट्रू भी है. बट यू नीड टू हैव द स्किल्स एंड नॉलेज एंड द एटीट्यूड टू ग्रो एंड ऑल ऑफ द kind of expertise that the role requires, right? So for me, it's like, जी. Yeah, so for me, it's like hosting events and running these exchange programs and working with tech companies for their international marketing, right? So and we have developed all those expertise, right? We know what it takes to like sell a tech product. We knows what it takes to like host a good event, and then we do like really good networking to grow all of this. And honestly, all that we've grown is because of networking. And the same for a lot of people, right? So you need to have the skill set, right? And then do networking to really kind of open doors and get more growth. और पाकिस्तान में आई थिंक बड़ा आजकल एक बात होती है कि यार यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें एम्प्लॉयबिलिटी इतनी नहीं होती, राइट? एंड आई थिंक उस बात का मतलब ये नहीं कि स्किल्स नहीं होते या इनकॉम्पिटेंट है. आई जस्ट थिंक कि शायद हमें स्ट्रेटजीज नहीं पता जिसकी वजह से हम राइट लोगों को टैप करें, राइट अपॉर्चुनिटीज पे पहुंचे. इवन दो आप में से बहुत से लोग यूनिवर्सिटीज में रॉक स्टार्स होंगे, बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, लेकिन इंडस्ट्री में मूव करते वक्त बहुत टाइम पे चैलेंज आता है कि यार अच्छी जॉब नहीं मिल रही, कोई राइट ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिल रही. और उसमें इशू क्या होता है कि आपका वो नेटवर्क ही नहीं है. आपने 4 साल जो है यूनिवर्सिटी में ही आपका नेटवर्क बना है. अब जब आप एकदम प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं, तो आप जनरली इतने ज़्यादा लोगों को खुद नहीं जानते. हो सकता है आपके पेरेंट्स जानते हो, कोई बड़ा भाई जानता हो. तो ये जो वक्त है 3-4 सालों का, you really need to use that when you're in university to develop your professional network as well, right? And a student, if you go somewhere, if you say कि अच्छा ये आपका MNC का ये project हो रहा है, want to volunteer, like work with you, do an internship or something, you'll find that people are very receptive, right? People are very receptive on uh, you know people who want to learn. So if you go and say कि अच्छा यार हम मेरा ये लर्निंग माइंडसेट है, मैं आना चाहता हूँ, मैं आना चाहती हूँ, सीखना चाहती हूँ कुछ, और उसके लिए मैं इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहती हूँ, तो आप बहुत सी जगहों पे जाएंगे और कहीं ना कहीं आपको जो है वो अपॉर्चुनिटी मिल भी जाएगी. तो but employability essentially, if we can like uh, like pin it down to a number of things. So it is number one, whatever skills you learn in university, kind of refining your skills, right? So if you're like a programmer, become like a good programmer, learn the latest trends or whatever, and also develop new skills, right? So when you move towards the industry, you have to सीख अच्छा यार यहाँ पर जो है कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए होते हैं, whatever रिपोर्ट राइटिंग करनी होती है, तो कॉन्स्टेंटली आपको
जो है नए स्किल्स सीखने होते हैं, पुरानों को रिफाइन करना होता है। फिर एक ओपन माइंड के साथ यू हैव टू एक्वायर नॉलेज, राइट? सो आज से 20 साल पहले शायद यूनिवर्सिटी डिग्री वाज इनफ टू डू योर 30 ईयर करियर, विच अ लॉट ऑफ आवर पेरेंट्स हैव डन। बट अब ऐसा नहीं है, राइट? अब तो आप जब यूनिवर्सिटी से निकलते हैं तो ऑलरेडी योर नॉलेज इज लाइक आउटडेटेड, राइट? सो यू नीड टू एक्वायर new knowledge, and you need to continuously do it if you want to grow in your life, right? And have like an open and somewhat flexible attitude, right? You can't say कि अच्छा हमने तो ये सीखा है ऐसे ही होता होगा. Things are moving really really fast in every industry, not just technology. And also have like a personal plan for career management, right? For how you want to grow your career, your professional life. And these things you really need to do like all the time, your whole life. इसका मतलब एक दफा में जान नहीं छूट जाएगी. And this is part of your life, right? So you learn something new, you work to acquire new knowledge, and it can be through your job as well, right? So आप एक जॉब करते हैं, वहाँ नए स्किल सीख लेते हैं, नया नॉलेज मिलता है, और इसी तरह आप ग्रो करते रहते हैं. बट यू रियली नीड टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड व्हाट एम्प्लॉयबिलिटी मीन्स, राइट? एंड दैट्स व्हाई व्हेन लाइक कुछ स्टूडेंट्स जाते हैं, वो 6 महीने की इंटर्नशिप करते हैं, तो काइंड ऑफ लाइक ज़्यादा एम्प्लॉयबल हो जाते हैं. एंड दैट्स द रीज़न, क्योंकि ये चीज़ें आप जाके इन प्रैक्टिस करते हो. लर्निंग जो है ट्रेडिशनली यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में हम सारे करते हैं. बट आप जब निकल जाते हैं इन इदारों से, आप प्रोफेशनल लाइफ में चले जाते हैं, तो लर्निंग थोड़ी सी शायद इनफॉर्मल हो जाती है. आपके वर्क एक्सपीरियंस से आप सीखते हैं. आप हो सकता है लाइफ एक्सपीरियंसेस से सीखें, किसी से मिले, कहीं ट्रैवल किया, कुछ किया. But you can also do like get coaching or mentoring, right? Reach out to maybe like one of my mentors on the call as well. But reach out to people who've done it, who are far ahead in your careers, and learn from their experiences, right? Someone who spent 20, 30, 40 years in the industry obviously knows a lot more than us. And we really need to have an open mind and also reach out and leverage them, right? These people have a lot of knowledge. We really would be lucky कि हम उनसे रीच आउट करें, उनसे सीख लें, rather than कि हम अपने एक्सपीरियंसेस से हर चीज़ सीखें. जिस तरह शायद हम अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, you can even find people in whatever domain you want to learn, whether that's programming or business development or arts or video making. Just reach out to people who are considered experts and get their mentoring, get their coaching. Yeah, so for your next career move, because the session is like networking for career growth, you need to kind of ask yourself these questions, and uh, एक प्लान आपको बनाने की ज़रूरत है स्ट्रेटेजिकली, जिसके अराउंड आपके फिर एक्शंस जो हैं वो होंगे, राइट? वेदर दैट इज नेटवर्किंग और स्किल डेवलपमेंट. नंबर वन इज कि आप अभी कहाँ हैं, तो यूनिवर्सिटी में, थर्ड सेमेस्टर में, सीख लिया है, कोई लाइक इंटर्नशिप ढूंढ रहे हैं, और कहाँ आप पहुँचना चाहते हैं. लेट्स से कोई लाइक 10 साल बाद वाली स्ट्रेटजी ना सोचें, अभी की सोच लें कि ठीक है यार, 1 साल में जो है ना किसी अच्छी कंपनी में जॉब करनी है, और इस लेवल की कंपनी होनी चाहिए, ये सीखना है, इस तरह मैं कंट्रीब्यूट करूँगा. और देन यू सी के व्हाट इज मिसिंग in yourself to kind of reach that point, right? What do you have, like, what do you have to do to be that person or go there or reach that goal, right? And in this kind of target, who can help you, right? And that's where networking comes in, right? You say कि अच्छा यार, इस तरह के लोग जो है ना, मुझे उनसे नेटवर्क डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, या मुझे ये स्किल सीखने की ज़रूरत है जो शायद मुझे प्रोफेशनल लाइफ से आएंगे, किसी से आएंगे, किसी मेंटोर से आएंगे. सो देन यू यूज दिस लाइक नेटवर्किंग as a tool to achieve your goals. But number one, you need to like really be clear कि गोल है क्या, और आपको आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपको चाहिए क्या. और सो लाइक स्पेशलाइजेशन जो है, आई थिंक यू नीड टू लाइक फिगर आउट हाउ डू यू यूज all these tools to maybe like
get specialization or uh, do things right that you're targeting. So planning, setting like smart goals. I'm sure all of this stuff you've kind of read in university as well or learned in your university. But you need to kind of have like a plan to act upon it and then reach your goals that you've set for yourself. Again, same बात वो कह रहे हैं. But then once you, so for now like आपका हो सकता है अभी गोल हो कि यार अच्छा फर्स्ट जॉब कैसे मिली, राइट, और वो शायद कोई इतनी आपके आइडियल ना भी मिले, आप can ठीक है let's settle for this, but maintaining the employability concept and constantly learning, growing, learning new skills, doing all of that, you can get the confidence and skills and also the opportunities to move, to grow, right? You won't be stuck in this, whatever job you get. If you maintain the employability aspect and then employability concept and constantly learn, you can always move to a better opportunity and do like move to a different company or a different domain or even like a different industry as well, right? या सो जिस तरह हमने स्टार्ट करते हुए डिस्कस किया था कि जो हम चार चीज़ें एसेंशली सीखेंगे, आई होप थोड़ा बहुत सीख लिया हो, वो ये चारों थी कि हाउ टू rather than build contacts, build effective relationships that can open doors for you, and be like a giver, have a give first mentality rather than a selfish mentality of what the other person can do for you, and have the relevant skills, knowledge, attitude, attributes to do that work. And networking will ensure कि आपके doors जो हैं, आपके new opportunities जो हैं वो आपको मिलती रहें. Yeah, so this is perfect. This is primarily what I had to share today, and along with a lot of my experiences. But I think we have some time, so अगर आपके कोई सवाल हैं तो please आप share करें. I'll try and answer them. Thanks a lot, sir, for the great presentation. So everyone, you can ask questions. If the mic isn't available, you can leave the questions in chat. And sir, I guess I shouldn't call him sir now. हाँ हाँ. Uh, Arzish Arzish कह लें. will be more than happy to answer your queries. Please. I have a question. Yes, please. बताइए. Sir, are there any tips you can share to increase networking or exposure, like especially nowadays when due to COVID, many opportunities that would have gotten like otherwise are cancelled? श्योर. तो आई थिंक अभी जो है ना, अभी तो ऑनेस्टली ज़्यादा आसान है नेटवर्किंग करना. तो पहले क्या होता था कि हमारी फिजिकल लाइफ जो है ना वो बड़ी इंगेजिंग होती है. तो आप जो हैं, आप एक टॉप कंपनी के सीईओ हैं, आप दफ्तर जाते हैं, काम करते हैं, शाम में जो है सोशल इवेंट्स पे जाते हैं, ठीक है. तो इतना टाइम नहीं होता डिजिटल मीडियम्स को वक्त देने का. लेकिन व्हाट आई फाउंड इन ड्यूरिंग कोविड इज कि whoever I've reached out on LinkedIn, most of them have replied, right? And all these digital events and online stuff that is happening, like every big shot is available now virtually. And I think वो तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि फिजिकली आप किसी इवेंट पे जाएं, शायद आपको उस तरह मौका ना मिले अपने आप को एक्सप्रेस करने का. But use LinkedIn, use whatever platform that your community uses, right? So अगर like प्रोग्रामर्स हैं या टेक्निकल लोग हैं तो वो शायद वो गिटहब यूज़ करते हैं, लोग ईमेल्स यूज़ करते हैं. लर्न हाउ टू सेंड कोल्ड ईमेल्स, राइट? सो I've always sent cold emails, right? कोई रेफरेंस नहीं, कोई इंट्रो नहीं. लेकिन अगर नहीं मिलता, preferably that way, but अगर नहीं मिलता, so write a well crafted email on who you are, what you can offer them, and how why should they reply to your email or why should they help you, right? And you'll find that a lot of people will respond. But I think in the digital world, if the person is on LinkedIn, try using LinkedIn. It's a really good platform, and not just like use LinkedIn to send messages to them. You really need to like complete your own
LinkedIn profile and your own social media presence and have like a professional profile and be active on LinkedIn as well, right? So it looks presentable when you reach out to someone. I think text में कोई सवाल आ गया हमारा. Thank. Yes, sir. May Umar I, was saying, yes, please, Bisma, go ahead. I just wanted to add to what Iza said. Like, we are in the second semester right now. So, being in second semester, we are not well equipped with so many skills to reach out to, big names. So, being in the initial semesters, what do you suggest that how can we, like, start our networking? श्योर. तो इसमें ये कि मतलब सेमेस्टर से कोई कनेक्शन नहीं है इन चीज़ों का. कोई ऑनलाइन जाएं, कोर्स कर लें कि हाउ टू बिल्ड योर सोशल मीडिया प्रोफाइल, फॉर एग्जांपल हाउ टू बिल्ड लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाटएवर. डू दैट, देन स्टार्ट रीचिंग आउट टू पीपल एंड there's a course on Coursera probably on how to write cold emails, right? So ये जो सारे skills हैं, they are available there, right? They're YouTube पे आप ये हर चीज़ सीख सकते हैं. मैंने भी वहाँ से सीखी है, बाकी लोग भी वहाँ से सीखते हैं. और अब ये कि उन सारों को आप किसी सेमेस्टर में आप ना भी हो तो आप सीख के उसे इन एक्शन ला सकते हैं. तो आप रीच आउट करेंगे 2 4 10 लोगों को, उनमें से कुछ लोग रिस्पॉन्ड करेंगे. Over time you'll understand and get better, get sure what kind of messages get a response, right? So for now, it's been like 5 years for me in like my professional life. तो अब ये है कि अब ऑलमोस्ट हर मैसेज का ही रिप्लाई आ जाता है अगर वो इंसान पढ़ ले. लेकिन ये डे वन पे नहीं होता था, राइट? डिस्पाइट ऑल द लर्निंग एंड ट्रेनिंग एंड ऑल ऑफ दैट. तो वो कुछ चीज़ें प्रैक्टिस से ही आएंगी. बट अगर आप सेकंड सेमेस्टर में हैं तो आपके पास हेड स्टार्ट है. आज स्टार्ट करें, 3 साल और हैं आपके पास सीखने के लिए, और उसमें बहुत सा आप सीख सकते हैं. एक जो पॉइंट था कि लाइक यू रियली नीड टू फिगर आउट कि like what you're trying to get out, right? So अगर आप second semester में हैं, you're reaching out to someone on LinkedIn. If you do not have something valuable to come out of this connection, don't reach out, right? Wait it out. Don't waste the opportunity. But kind of find clear value that you can create for the other person, that you can create for this relationship. Honestly, you just need to figure out why they should reply to your message. Okay, thank you. Yeah. Sir, we have a question in chat. Umar Yeah. Wasim is asking, what is the role of internship during the study tenure in getting the job after 4 years? हाँ. So during the study tenure, अच्छा, तो इसमें ये होता है कि पूरी मतलब वेस्ट में या डेवलप वर्ल्ड में जो इंटर्नशिप है या प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसका बड़ा की रोल है एजुकेशन के साथ साथ, राइट? कि आप पढ़ रहे होते हैं, हर साल आप इंटर्नशिप करते हैं. इवन एंड पे तो आपको 6 महीने की इंटर्नशिप करते हैं, क्योंकि जब तक आपकी प्रैक्टिकल लर्निंग नहीं है, आप इंडस्ट्री में जाएंगे, इंडस्ट्री कहेगी कि ठीक है यार आपने डिग्री कर ली है, बट प्रैक्टिकली तो आपको चीज़ें नहीं आती. तो फिर आप जीरो से स्टार्ट करें, बहुत थोड़े से पैसों से स्टार्ट करें, वट. और ये पाकिस्तान में होता है, यही होता है पाकिस्तान में. तो आप 4 साल की डिग्री करते हैं, इंडस्ट्री ये कहती है कि अच्छा एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है, एम्प्लॉयबल ग्रेजुएट्स नहीं है. तो अगर आप इन 4 सालों के बीच में, जो कि बहुत सारे टाइम मिलता है, हो सकता है समर्स मिलते हैं, जो भी मिलता है, उसमें इंटर्नशिप करें, तो बहुत से आपको इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स, लर्निंग, न्यू स्किल्स, द नॉलेज यू नीड, वो आ जाएगा. तो जब आप यूनिवर्सिटी से निकलेंगे, प्रॉबली इनमें से ही कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको जॉब ऑफर भी दे देगी. So, sir, there's a related question that people ask is that are unpaid internships worth it? Like, there's an apprehension among students, like, of course, they're going to get experience working for internships, like the professional life, get a taste of that. So, are unpaid internships worth the things you're getting back from that? अच्छा, so I think ये this is honestly like a case by case question. For me, I think like, तो हम इंटर्नशिप देते हैं, हम पेड देते हैं, हमें थोड़ा सा अनफेयर लगता है. लेकिन ये कि टू ईच देयर ओन. बट आई थिंक अगर आपको लग रहा है कि लर्निंग अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर, राइट? तो फॉर एग्जांपल कोई
अच्छा स्टार्टअप है, रोल अच्छा है, लीडरशिप सही है, कंपनी का कल्चर अच्छा है, अगर वो पे नहीं भी करे, आप एक दो दिन जाते हैं, आपको समझ आती है कि नहीं यार यहाँ लर्निंग मेरी हो जाएगी, then it makes sense, right? But otherwise you should try for paid internships. The problem is that there are like way too many people in Pakistan, so if for paid internships there's like hundreds of application. For even free internships there are like so much competition, right? So how do you like balance these things out? So there are a couple of more questions. Is LinkedIn best for searching internships? Pakistan में जो है ना, Facebook is like very active for job opportunities, for people sharing stuff, for people sharing opportunities, and लोग connect भी कर लेते हैं. आप किसी को Facebook request भेजें और आपका प्रोफाइल जो है वो थोड़ा बेहतर बनाओ, आपने इन्फॉर्मेशन डाली जिस तरह लिंक्डइन होता है. सो कंसिडर कि पाकिस्तान इज आल्सो द लिंक्डइन, लाइक फेसबुक इज आल्सो लाइक लिंक्डइन इन पाकिस्तान. सारा कुछ ही तकरीबन पब्लिक है, तो आप कनेक्ट करें लोगों से. Both Facebook and LinkedIn, I think, are like really good platforms in Pakistan, specifically for professional growth, for finding internships, right? And how we can attain internships in this COVID time. Reach out to people, reach out to organizations, see which organizations are hiring. It takes hard work to get good opportunities. I was talking to someone in the US, उन्होंने कहा जी हमने 120 जॉब्स पे अप्लाई किया, फिर जाके जॉब मिली. हमें लगता है कि नहीं यार, पता नहीं, अमेरिका में तो जो है ना, आप यूनिवर्सिटी से निकलते हैं तो साथ ही जॉब मिल जाती है. यहाँ भी नहीं मिलती, यहाँ भी बड़ा मुश्किल काम करे. 120 एप्लीकेशंस डाली हैं, और यहाँ एप्लीकेशन डालनी भी अच्छी पड़ती है. पाकिस्तान में हम क्या करते हैं कि हम रोजी पे जो है वो एक ही प्रोफाइल वो रैंडमली हर जॉब पे अप्लाई कर देते हैं. तो जो है ग्राफिक डिजाइनर की जॉब भी हो तो हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर के सीवी आए होते हैं या मैनेजमेंट के आए होते हैं. सो इफ यू सेंड अ गुड एप्लीकेशन टू any of the job posts, right? I guarantee you कि people respond, right? I've been on the other side, my friends are on the other side. हमें तो अच्छी एप्लीकेशन नहीं आती, right? So आप एक अच्छी एप्लीकेशन, एक अच्छा सा कवर लेटर अगर लिख के भेज दें. The other, you know, one trick is to like reach out to the CEO, right? Find a company, find a startup, find whatever. Reach out to the CEO, send him like a really good email. This may work, this may not work. It's kind of like a hit and run के आप email भेजें कि यार आपका स्टार्टअप ये करता है, मेरी ये एक्सपर्टीज हैं या ये एस्पिरेशंस हैं, ये एम्बिशंस हैं, एंड इस तरह मैं वैल्यू ऐड कर सकता हूँ अगर ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिल जाए, राइट? एंड a lot of times what happens is कि if you like convince this one person with your really like beautifully crafted email, they'll say कि अच्छा ये जो बंदा हमारा हायर कर रहा है इससे तुम्हारा इंटरव्यू अरेंज करा दिए. So there are many such tricks and strategies, right? If you kind of set your mind to it और आप कहें कि अच्छा अगले 3 महीने जो है ना मैंने इंटर्नशिप्स ही अप्लाई करनी है और मैंने ढूंढ के उठना है, तो आप कर लेंगे. अच्छा, any other platform we reach out to find internships? Rosie is okay. There is this other job platform in Pakistan जिसका मुझे नाम भूल गया है. हम वो यूज करते हैं क्या, ब्राइट स्पायर? नहीं, there's something else. So that is better. Uh, what is the ideal time to do your first internship during BSc? Hmm. मैंने की नहीं है बीएससी, मैं इसमें कुछ बता नहीं सकता. मेरे ख्याल से तो डे वन से कर लो. यूनिवर्सिटी में तो वैसे ही इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल लर्निंग होती नहीं है. तो आप बैलेंस करें, पार्ट टाइम इंटर्नशिप कर लें, यूनिवर्सिटी के करीब कोई ढूंढ लें कंपनी, कोई कोई अपॉर्चुनिटी, और वहाँ जाएं. हफ्ते में 7 दिन ना जाएं, 2 दिन चले जाएं. अब तो वैसे ही वर्चुअल दुनिया चल रही है तो ज़्यादा आसान हो गया. एक अपॉर्चुनिटी मैं शेयर कर देता हूँ इधर. एक हमारे दोस्त ने कंपनी बनाई है, तो ये तो वेंचर फॉर पाकिस्तान के नाम से ये प्लेटफॉर्म है. आप चाहें एज अ स्टूडेंट साइन अप कर लें, और ये आपको समर्स में इंटर्नशिप्स कराते हैं टॉप टेक कंपनीज में, राइट? सो टॉप ग्रोइंग जो स्टार्टअप्स हैं, जो कंपनीज हैं, उनमें स्टूडेंट्स को कनेक्ट करते हैं और इंटर्नशिप कराते हैं. तो दिस इज ऑल्सो वन प्लेटफॉर्म दैट यू कैन यूज. जी, if there's any other question, please do share now. I wanted to just ask that do you have some type of a demo email that we can like see so that we know how to approach these companies for internships? हाँ, तो गूगल से मिल जाएगी ना.
देखिए सारी चीज़ें गूगल पे पड़ी हुई हैं, आप गूगल पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, मुझे खुद जो डेमो ईमेल चाहिए होती है मैं गूगल से ढूंढता हूँ, राइट। सो अगेन आपका जब वो माइंडसेट होगा कि यार ये करना ही है, तो वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आई थिंक एक और जो, बस क्योंकि कॉल भी थोड़ी एंड होने वाली, मैं पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूँ कि कितने लोगों ने जो है मुझे लिंक्डइन पे ऐड किया है या ढूंढा है। क्योंकि अगर नहीं किया तो ये तो अपॉर्चुनिटी आपने मिस कर देनी है ना, क्योंकि मेरे क्या को 5,000 कनेक्शन हो गए, राइट। तो आपको तो मौका ढूंढना चाहिए कि आप किसी से मिलें, किसी से इंटरेक्ट करें, किसी की फेसबुक पोस्ट पे कमेंट भी करें तो उसको लिंक्डइन रिक्वेस्ट भेज दें, राइट। क्योंकि जब ये सारे लोग आपके नेटवर्क में आ जाते हैं तो उनके नेटवर्क की भी पोस्ट आपको नजर आती है, राइट। सो आपको सिर्फ लाइक उस बंदे की पोस्ट नहीं नजर आती, उसके कनेक्शंस की भी पोस्ट नजर आती है, और वहाँ ही अपॉर्चुनिटी है सारी, राइट। सो बट अगेन लाइक improve your LinkedIn profile as well, क्योंकि जब कोई रिक्वेस्ट आए and send a message, like always with the LinkedIn request there is an option, if you click like the 3 stars वाला बटन जो राइट पे है, कि send a कस्टम रिक्वेस्ट और समथिंग, राइट। सो जब आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट आती है उसमें आप 3-4 लाइंस डाल सकते हैं, राइट। सो जो भी बंदा वो लाइन डालता है ना उसकी तो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होनी ही होनी, ठीक है। वरना तो लोगों को जो है वो मल्टीपल डजन ऑफ रिक्वेस्ट आती रहती Okay, thank you. है। अगर कोई और सवाल है तो शेयर कर दें, वरना वी कैन एंड द कॉल। एंड अगेन आई एम शेयरिंग माय लिंक्डइन, अगर कोई कनेक्ट कर ले और फिर फ्यूचर में जहां भी मैं मदद कर सकता हूं, वेदर यू वांट अ रेफरल फॉर एन इंटर्नशिप और समथिंग और अ जॉब, व्हाटएवर, हैप्पी टू हेल्प। Yes, sir. I was just going to ask for contact information, and thank you so much for leaving the link. So if anyone has question, please do ask, or we can let sir go. हाँ, लेट अर्जिश गो यार, अभी तो सर वाली बात पे इतना लंबा हमने सेशन किया। Apologies. सही है, आई थिंक कोई और सवाल नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग एन अमेजिंग ऑडियंस। फास्ट इज लाइक एन अमेजिंग यूनिवर्सिटी, बहुत ज़्यादा आपके रॉक स्टार अलुमनाई है। इवन अमेरिका में भी फास्टियंस का एक ग्रुप है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं, यू नेचुरली हैव एन एज के इफ यू रीच आउट टू समवन हु is from fast, they have like a motivation to help you, right? They feel affiliated के यार ये जो हसन है ये फास्ट से है तो मैं इसकी किस तरह मदद कर सकता हूँ। But you need to make it easy for them to help you, right? So help me in helping you, right? If you want a job referral, send me a proper crafted email with your अच्छे वाला CV that I can just forward, right? Don't ask someone who's working in Facebook as like software engineer कि यार आप जो है ना मुझे email भी आप ही लिख के दें, right? तो because you need to understand that if you are able to make this network, how do you like easily leverage them, right? Whenever I want an introduction, I do not ask the other person कि यार अच्छा आप ही लिखें, I write the full email उसकी तरफ से, right? और मैं वो उन्हें भेज देता हूँ, तो वो क्या करते हैं कि उसी ईमेल को फॉरवर्ड करते हैं और वो दूसरे बंदे को टैग कर देते हैं। सो इट टेक्स लाइक 30 seconds फॉर हिम। बट अगर वही मैं उनकी 5 मिनट का काम बना दूं तो वो कभी भी नहीं करेंगे, right? Similarly, reach out to all these amazing fast alumni on LinkedIn, whether working inside Pakistan or at all these organizations outside Pakistan. But send a professionally crafted message, send a message that shows them you value their time, and there is something for them, right? That something can be कि वो आपकी मदद करें, राइट। बहुत से लोग सिर्फ मदद करने के लिए भी काम कर देंगे कि उससे कि अच्छा this will help me grow, I want to learn this internship, I want to get your mentorship or whatever, but you need to give them the opportunity to do something. Perfect. I think with All this right. I'd like to take a leave. Thank you so much Thanks a lot, for sir. doing this, and again feel free to reach out wherever I can be of help. Thanks a lot, sir, for providing us with a new perspective. And I guess we'll end the call now. Thank you again. Bye. Allah Hafiz, everyone.